Hello students, let's welcome to our YouTube channel Physics for UG. So in this video, we shall start with the energy equations. It has two equations actually. This is first equation and another is second equation. So you have to derive first and second energy equations. So energy क्या होता है? ये जो internal energy U, it is the sum of total energy of all the molecules in the system. And this internal energy may be a function of any two of the four variables P, B, T and S. Okay, so the first energy equation U depends on V and the second energy equation U depends on P. हमको क्या करना है? U depends on V means we have to find del U by del V and the second means we have to find del U by del P. हमको ये दोनों करना है. U V के ऊपर डिपेंड करता है और U P के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, वो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी इक्वेशन होता है. तो लेट्स स्टार्ट. For the first energy equation, this one the first energy equation, we know from thermodynamic potential du equal to TdS minus PdP. This is very important equation in potential. du internal energy change होता है, TdS इक्वल टू dq होता है, ds एंट्रोपी चेंज होता है और t टेम्परेचर होता है, p प्रेशर होता है, dv फॉर चेंज इन वॉल्यूम होता है. सो du इक्वल टू TdS माइनस PdP. सो du बाई dv, क्योंकि हमको फर्स्ट इक्वेशन में u डिपेंडेंट भी, हमको du बाई dv चाहिए, इसीलिए डिवाइडिंग dv ऑन बोथ साइड्स. सो du बाई dv इक्वल टू t इंटू ds बाई dv माइनस p dv बाई dv इक्वल टू 1. दिस वन पार्ट इज 1. इफ t इज हेल्ड कांस्टेंट, अगर हमको t को कांस्टेंट रखना है देन डेरिवेटिव बिकम्स पार्शियल. सो डेल यू बाई डेल वी, बिकॉज क्योंकि a के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम पार्शियल लिखेंगे. सो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू t इंटू डेल एस बाई डेल वी कांस्टेंट t माइनस p. वही पार्ट, बस हमको t को कांस्टेंट लिखना है. सो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू t इंटू del p by del t at constant p. This one is the second Maxwell's relation in thermodynamics. Maxwell has four equations. These are very important. These are the actually application of Maxwell relation. So del s by del v at constant t equal to del p by del t at constant b. We use this part here. Del s by del v at t and del p by del t at constant v. The equation will be del u by del v at t means variation of u with respect to v at constant temperature is equal to t into del p by del t at constant b minus p. This is called first energy equation. Okay, so now we shall move to the next part, that is second energy equation. Okay, वो क्या होता है? सो सेकेंड में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मैंने जो बोला था डेल यू बाई डेल पी और कांस्टेंट टी वही निकालना है, वो सेकेंड एनर्जी इक्वेशन होगा. वी नो फ्रॉम द सेम फार्मूला पोटेंशियल थर्मल पोटेंशियल डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी टी पी. क्या करना है, हमको डी पी डिवाइड करना है क्योंकि हमको डी यू बाई डी पी चाहिए. सो डी यू बाई डी पी इक्वल टू टी इंटू डेल एस बाई डेल पी माइनस p dv by dp. या dv होता है dp डिवाइड करने के बाद p dv by dp होता है और ds by dp होता है और du by dp होता है. So taking t as constant, so we can change this d as del because temperature t is constant, taken as constant. So del u by del p at constant temperature equal to t into del s by del p at constant temperature minus p into del p by del p at constant temperature. So what to do? Del u by del p at temperature t constant equal to minus t into del p del s by del p equal to, so here we use del s by del p at constant t is equal to minus del v by del t at constant p. This is
the third Maxwell relation. Okay, you have to remember all the four equations, Maxwell relations. I have already made one video regarding this, how to remember this one, Maxwell relations, four equations, very important. So use here, that will be, so this part is this one we use here. So take minus and minus common, this minus taken as common, so second part will be plus. So t into del v by del t are p, plus p into del v by del p are constant t, and this equation is our second energy equation. So in both the equations, in the first part we derived del u by del v, and in second part we derived del u by del p. This is first one and this is second one. We call these two equations as energy equations. Thank you. If you like this video, you subscribe, share and like this channel. Thank you.